students, let us discuss about proteins. First of all, what is meant by proteins? Proteins are what? These are actually the polymers of amino acids. Means when large number of amino acid units they connect with each other, they form a long chain polymer, and that is known as protein. First of all, what is alpha amino acid? Then how the structure of amino acids are formed, that all we have to discuss. Let us see that amino acids, they contains two functional groups. The first is carboxylic group and the second group is amine group. That's all it is called as amino acid. I'll give you one example, R, CH, NH2 and COOH. Why it is known as alpha amino acid? Then beta may be there, gamma is there. So how we used to name them? See, this is the carboxylic group. With the carboxylic group, the first carbon is connected, that is named as alpha. Two functional groups, carboxylic and amino group is present. And with the first carbon atom, first alpha carbon atom itself, the amino group is connected. So this is your alpha amino acid. If I give you another example, like if it is R, CH, NH2, CH2 and COOH. So this carboxylic group is given first preference. If it is first, then near to this is alpha, this is beta. तो इस अमीनो एसिड को हम कहेंगे बीटा अमीनो एसिड्स. तो ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें अमीनो ग्रुप आपके अल्फा कार्बन से कनेक्टेड होता है. Now there are near about 26 proteins amino acids are known, and out of those 26 amino acids, researchers studies continuously these are done, and we know that the 20 amino acids, these are either present in animals, including us also, hormones and all, they contains proteins, and plants itself. And the remaining 6, these are present in special tissues. In your book, the 20 amino acids, their names are given. Classification of amino acids. Basically, 3 type of amino acids are there. The first, acidic amino acid. The second, basic amino acid. The third, neutral amino acid. It's very easy to distinguish them. Why they are called with these names? Acidic means more carboxylic groups are there. Basic means more amino groups are there. And neutral means carboxylic and amino groups both are in equal numbers. So in that case, it will be known as your neutral amino acid. One another category is also there, that is essential amino acid, and it is your non-essential amino acid. Essential, the word explains that बहुत जरूरी है. जरूरी क्यों है? Because body नहीं बनाती इसको. Since these are not synthesized by body. But these are necessary for growth. So we have to take intake through diet. For example, lysine, ऐसे अमीनो एसिड्स इनकी हमें जरूरत है, भोजन के थ्रू लेते हैं. नॉन एसेंशियल, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी. हमें नहीं पता कब बन जाते हैं, कब कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ती. बट दे ऑल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक एग्जाम्पल, ग्लाइसिन. This is the simplest amino acid. Okay. Now we'll see about the properties. Amino acids, they all are colorless and crystalline solids. They are nicely soluble in water.
their melting point is also very high. And since they are having amino group as well as carboxylic group, both groups, so it used to behave as salts rather than a simple amine. Most important property about this, when this amino acid is in aqueous solution state, see, R CH with this amino group NH2 is connected, C double bond O and O NH. थोड़ा सा खोल कर लिख दिया स्ट्रक्चर. We know this amino group is nitrogen is having one lone pair. In aqueous state, what happens that the bond used to break from here in such a way that the electron pair is transferred to this oxygen itself. So it becomes H plus ion. And this H plus ion goes and get connected to the lone pair of the nitrogen. So it gives us a bipolar molecule. What you will see here with the help of lone pair, the hydrogen ion is connected, so it becomes NH3, and here it is C double bond O and O minus, dipolar molecule from amino acid. So this dipolar molecule is known as Zwitter ion. It's very important. We have to study this. Normally in exams, it is the common question which is normally asked from this part. What is Zwitter ion? Explain its structure. तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. Now we will discuss about peptide linkage. एक अमीनो एसिड, भाई पढ़ा हमने प्रोटीन्स के, these are the polymers of amino acid. अगर ये अमीनो एसिड के पॉलीमर्स है तो ये स्मॉल यूनिट्स आपस में कनेक्ट भी तो होती होंगी. So these are connected with the help of peptide linkage. Now let us see. I will take example of two amino acids, H2N CH2 COOH. This is what? This is glycine. I will take another example, that is H2N CH CH3 and COOH. ध्यान देना, ये ग्लाइसिन था, ये अलानिन. अलानिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. और प्रोटीन्स की लिस्ट, अमीनो एसिड्स की लिस्ट में सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यही है. अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऐसे लिख देती हूँ, तो व्हेन HCl some acid is added in this, hydrolysis takes place. ये निकल गया, ये निकल गया, तो जो कंपाउंड बनता है यहाँ पर CO यहाँ से और NH यहाँ से. This is the linkage with which two amino acids gets connected. So this part, this is known as peptide linkage. ये कहलाता है आपका पेप्टाइड लिंकेज. ओके, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिनके मॉलिक्यूलर मासेस 10,000 U से ज्यादा होते हैं, they are known as proteins. Now we'll discuss about the classification of proteins. This was about the amino acid. Now classification of proteins. Proteins are of two types: fibrous protein and globular protein. फाइब्रस नाम ही बता रहा, फाइबर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से पैरेलल चलते हैं. सो थ्रेड लाइक और fiber in which the polypeptide chains, they used to run parallel and they used to held together with each other either with the hydrogen bond or with the disulfide bond. Either fiber proteins runs parallel and they are held with hydrogen bonds or disulfide bonds. Okay, और ग्लोबुलर, ग्लोबुल मीन्स गोल गोल, तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स in of chains of polypeptides
दूसरी बात कि ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, फाइब्रस ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये आपके सॉल्युबल होते हैं. Here I can give an example like keratin. बालों में होता है ये प्रोटीन. And here I can give example like glycine. So this is globular and fibrous proteins. Now let us discuss about structure of structure and shape of proteins. Structure and shape of protein. Basically, two type of structures are there. Primary structure and then secondary structure. One or more polypeptide chains having large number of alpha amino acids in a specific structure. One or more polypeptides. Okay, chains having large number of amino acids and they all are linked in a specific sequence. Linked in a specific sequence. बात करते हैं जैसे मान लो एक है आपका एक दूसरा तीसरा चौथा अगेन long chain is there and they all are fixed in a specific order. Then it is your primary structure. Let us see secondary structure. We'll see these type of lines are parallel to each other. And here the hydrogen bonding, these type of lines were there and the hydrogen bonding is seen between hydrogen bonding is seen between carboxylic group and amino group. Secondary structure is composed of two parts. एक होता है इसमें अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स यहाँ पर जितने भी पेप्टाइड चेन्स होते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ राइट हैंड साइड पे ट्विस्ट हो जाते हैं. जैसे मान लो ये एक है ये, तो मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही आपका ट्विस्ट हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स. देन द सेकंड पार्ट इज बीटा प्लेटेड शीट. जितनी भी पेप्टाइड चेन्स होती है वो सारी की सारी इस तरीके से अल्फा हेलिक्स बनाकर और मैक्सिमम जितना ज्यादा वो एक्सटेंड हो सकते हैं उसके बाद उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. लाइक दिस इफ वन मोर इज देयर अल्टीमेटली इनके बीच में नहीं, अल्टीमेटली ये यहाँ इनके बीच में लिंक स्टार्ट होता है एंड दैट इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ना secondary structure alpha and beta. Now we'll see tertiary structure. Here the further folding of secondary structure takes place, and in the tertiary further folding of secondary structure. In short, I will revise them again. And the quaternary structure when we see, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा कई तरह के अमीनो एसिड यूनिट्स दे होल यूज्ड टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो रहती है वो सब एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं. डिफरेंट polypeptide chains linked to each other forms a big molecule. छोटा सा इसको रिपीट करें. ये एक सिंपल
है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक सबके एक ऑर्डर फिक्स दिए हुए हैं। ओके, यही आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर में आता है, तो ये आ गया। आप इस सब में इन सब ऑर्डर्स को बता सकते हो वापस से। टर्शरी में इस यही और ज्यादा फोल्डेड हो जाए, ये हो गया। एंड क्वाटरनरी में एक, दो, तीन, ये इसके साथ लिंक्ड हो गया, ये इसके साथ लिंक्ड हो गया, ओवरऑल एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार हो गया। दैट इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द लास्ट टॉपिक फॉर दिस, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हर एक प्रोटीन में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर भी बताया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, इसमें एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का। अगर किसी कारण से चेंज इन टेम्परेचर होने की वजह से, या फिर चेंज इन पीएच की वजह से, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट डिस्टर्ब्स, then what happens in the, then protein loses its biological activity, and that is known as denaturation. Okay, that is known as denaturation of protein. भाई when the egg is raw, कच्चा अंडा फोड़ दो तो समेट नहीं पाते, लेकिन उसको बॉईल करते हैं तो अंदर का पूरा मास व्हाइट सॉलिड एंड येलो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. So that is due to the denaturation itself. So here the proteins are over.